Good morning, student. Myself Manoj Chotia from Raghunath Vidyalaya. We are studying circulatory system in human being. In this chapter, we divided circulatory system in three parts. First of all, blood. Second, blood vessels, and third, heart. Among them, we studied blood vessels, and external and internal structure of heart and working of heart. Now, today's our topic is double blood circulation. In human, the blood circulation is called double blood circulation because to complete the circulation in the body, blood has passed through heart for two times. Firstly, the impure blood from body's tissue or cells do respiration, and by respiration there is a production of carbon dioxide, and this carbon dioxide carries by blood, so that blood is called impure blood, and some other nitrogenous substances are also produced by metabolism, that's also carried by blood. So from body, superior and inferior veins carries this impure blood to the right part of heart. This is heart, so right part of the heart, and from right part of the heart, pulmonary artery. Remember, this is pulmonary artery. Normally in artery, pure blood is supplied, but here in pulmonary artery, impure blood is carried. So this pulmonary arteries pass through this blood from right ventricle or right part of the heart to the lungs, and there this blood is oxygenated, or alveoli can absorb CO2 and give O2 to the blood, and this pure blood goes to left part of heart by pulmonary vein. From lungs to pulmonary vein, only single vein in which pure blood is carries, which is that vein, pulmonary vein. So this pulmonary vein carries pure blood from lungs to heart, and from heart of the left part, and from heart's left part by the left ventricle, which we can study in the mechanism of heart. Through aorta, this blood pass through whole the body. So there is blood is goes two times in the heart. First of all, from body to heart and heart to body, one circulation, and another from heart to lung and lung to heart is second circulation. So this is called double blood circulation in human being. डबल ब्लड सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों डबल ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग में होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. एक बार बोर्ड के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर मिक्स इन द हार्ट. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होते, नहीं हार्ट में होते हैं और नहीं ब्लड वेसल्स में होते हैं. दैट इज ऑलवेज रिमेन सेपरेट. सेकेंड, टू कंप्लीट ए साइकिल इन द बॉडी, ब्लड हैज टू पास थ्रू द हार्ट फॉर टू टाइम्स. फॉर द फर्स्ट टाइम द इम्प्योर ब्लड goes to lungs through the right auricle and ventricle, and second time pure blood from lungs through pulmonary veins come to the left auricle, then in left ventricle, and from there by single aorta goes into complete body. In this way it is clear. Then to complete single cycle, blood passes through the heart two times. It is called double blood circulation. Now the next topic in this chapter, last but not least, because the disease related to circulatory system is removed for COVID-19 syllabus deduction. So last topic of this chapter is lymphatic system. Just like blood, another liquid is also found in our body, and that is also passed or carries in the some ducts. So whole this system is called lymphatic system. Actually में
लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स टुगेदर फॉर्म लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ vessels and lymph node, these three together consistently called lymphatic system. So first of all, what is lymph? Lymph flow in the lymphatic system in fluid from in the capillaries due to pressure. Blood is filtrated, then the filtrate is known as lymph. जो ब्लड वेसल्स होती है, उन ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है वो प्रेशर के थ्रू पास थ्रू होता है या कैरीज होता है, बहता है, ठीक है. तो उस प्रेशर के कारण ब्लड का कुछ पार्ट जो है वो टिश्यूज में आ जाता है या ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं. इट इज कलरलेस ट्रांसक्यूलेंट, मीन्स अर्ध पारदर्शी होता है, ट्रांसक्यूलेंट एंड एल्केलाइन वेस्कुलर टिश्यू. इट इज जस्ट लाइक ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा के समान होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ओनली फॉर दैट देर आर प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन लेस क्वांटिटी. जो प्लाज्मा में प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फेट होते हैं, उससे कम फॉस्फेट, कैल्शियम और प्रोटीन किस में होते हैं? लिम्फ में होते हैं. सो इट इज जस्ट लाइक ए प्लाज्मा. Differentially is only for there is a protein, calcium and phosphate in less quantity and excretory substances are more. Excretory substances क्या होते हैं? प्लाज्मा से ज्यादा होते हैं. That is called lymph. और साथ ही साथ आपको ध्यान में होगा ब्लड का कलर जो है रेड होता है आरबीसी के थ्रू, तो इसमें आरबीसी भी नहीं होती. लिम्फ हैज नो थ्रोम्बोसाइट्स एंड रेड ब्लड carpels. It contains lymph cell or lymphocyte. So this is lymph. Second, lymph vessel. There are so many lymph vessels in our body. If we see the structure of our body, then there are so many lymphatic vessels are found. Just like, and they have this type of net-like structure are found in lymph vessels, but there is two main lymph vessels. There are thoracic duct and right lymphatic duct. Lymph are also flow in the body like blood. Various tissues of the body are being impressed in the lymph. Exchange of gas and substances between cells and blood is done through lymph. The lymph vessels are like a vein. Lymph always flow in the vessels toward heart from the organs. Pressure is in these completely less than vein. वेन से इनमें प्रेशर क्या होता है? कम होता है. उनका डायमीटर भी क्या होता है? वेन से कम होता है. और इनमें ब्लड जो है वो लिम्फ जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यानी बॉडी पार्ट टू हार्ट. अपन ने देखा ब्लड वेसल्स, आर्टरी क्या करती है? पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, और वेन जो है वो ब्लड को हार्ट को सप्लाई करती है, यानी टू डायरेक्शन में क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है. लेकिन लिम्फ का फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है. द फ्लो ऑफ लिम्फ इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड मसल्स प्रेजेंट अराउंड देम. उसके चारों ओर जो मसल्स होती है उनके कॉन्ट्रैक्शन से और लिम्फ डक्ट के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? इनमें फ्लो होगा. दिस सिस्टम हैज सेवरल स्मॉलर वेसल्स, बट टू मेन वेसल्स आर एज फॉलो. फर्स्ट, thoracic duct and second, right lymphatic duct. Thoracic duct, it starts from right part of the head and carries lymph to posterior part of the cervix. Thoracic lymph in the posterior foreskin and abdominal and anterior left part of the body, head, neck, thorax and forelimb and left subclavian vein and internal cervical begin from the internal jugular vein opens into the thorax. Next, second, right lymphatic duct. This is located in the neck. It collects lymph from right part of head, neck and forelimb and thorax. This opens in the venous system right into the joining place of right subclavian vein and right carotid vein. Okay, now third, lymph node. Lymph glands are situated at several places in the lymph vessels. Lymph glands are situated in several places in the lymph vessels. In these nodes, net of lymph
capillary and lymphocyte are situated. Lymph glands are situated near big blood vessels in the head, neck and armpit. Just like you can know about tonsil. Tonsils are also lymph node. Okay. Now function of lymphatic system. Lymphatic system के function क्या क्या है? Lymph act as the mediator in between blood tissue. ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या करता है? मीडिएटर का काम करता है. दिस टेक डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स एंड O2 फ्रॉम ब्लड एंड गिवन टू द टिश्यू, एंड फ्रॉम टिश्यू इट ट्रांसफर एक्सक्रिएटरी सब्सटेंसेस एंड हॉर्मोन्स to the blood. Next, lymphatic system is helpful for the transportation of absorbed nutrient substances, especially fat, glycerol and fatty acid are transported by the lymphatic system. Third, absorb fat from intestine. Absorbed fat from intestine passes through lacteal vessels and firstly goes into the lymphatic system and then into the venous system. And last function of lymphatic system is while blood carpels present in lymph engulf germs. So these are the lymphatic function of lymphatic system, and this chapter is completed. Thank you.